नमस्कार, विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक व्यास। आज कोविड-19 के कारण हमने एक और महत्वपूर्ण शख्सियत को खो दिया है। भारत रत्न, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। आज के कार्यक्रम में हम उस बातचीत का अंश आपके साथ बांटेंगे जिसमें डॉक्टर अर्नब बसु बता रहे हैं प्रभाव मनोवैज्ञानिक तौर पर कोविड-19 का हमारे जीवन पर। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे दो ऐसे उत्सवों की झलकियों की तरफ जिसमें हम गणेश उत्सव को जानेंगे वत्तल धाम, न्यू जर्सी से, और साथ ही गणेश उत्सव पर एक रिपोर्ट साई मंदिर हिक्सविल से। तो ये सब आपकी प्रतीक्षा करेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। कोविड-19 के प्रभाव का असर कई रूपों में हमारे सामने आ रहा है। सारा जीवन जहां अस्त व्यस्त हो गया है, यातायात हो, व्यापार हो, चिकित्सा सुविधाओं में भी परिवर्तन और वैक्सीन न होने का भी एक असर है, और जिन जिन को कोई प्री कंडीशन है उन पर कोविड-19 और भी भारी पड़ता है। आज एक दुखद समाचार भारत से आया, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के निधन का। वो 84 वर्ष के थे। 11 दिसंबर 1935 को वेस्ट बंगाल में जन्मे प्रणब मुखर्जी जी ने भारतीय राजनीति पर एक अमिट चिन्ह छोड़ा है। ये बात अपने शोक संदेश के साथ कही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उन्हें एक ऐसा राजनीतिज्ञ बताया सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने जो राजनीतिक अस्पृश्यता में विश्वास नहीं रखता था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें एक महान नेता बताया और ये कहा कि भारत ने अपना एक महान नेता खो दिया है। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी के पुत्र अभिजीत ने ये समाचार ट्विटर के द्वारा सब तक पहुंचाया। भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद जी ने दुख बताते हुए इसे एक युग का समापन बताया है। कोविड-19 के चलते जिस तरह की मानसिक स्थितियां हमारे सामने उत्पन्न होती हैं, उनके बारे में हमने बातचीत की डॉक्टर अर्नब बसु से। उनका कहना था कि थोड़ा स्ट्रेस सफलता के लिए और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है। साथ ही जिनके अंदर अनिश्चय का सामना करने की अधिक ताकत होती है, वो इस तरह के चुनौतीपूर्ण दौर को सरलता से पार कर पाते हैं। Imagine your life on a beach all the time. How long can you actually live there without having any clear goals? Your life cannot be a vacation all the time. So what I'm trying to say is that a certain amount of stress is actually healthy for the body, healthy for the brain. But situations like the current pandemic are they're globally prevalent. It's in the news all the time. And now we have reached a point where the stress is no longer what is beneficial. It is now affecting everybody. It is affecting a lot of people very negatively. I feel there are two main psychological themes that are at play here in dealing with the stress that comes from the coronavirus pandemic. One of them is our need or our desire to be able to control everything in our lives and to feel that we are the masters of everything that happens in our life. So if you think about it, even a small little thing like a traffic accident on the way to work can really upset our day and can throw us out of gear. Absolutely. To balance that, we have to have another psychological theme which I think is existing right now, is that those who live better with uncertainty, who do better in periods of stress like this, who do better, they are usually the ones who have the ability to live with uncertainty. So I think it is an interplay between these two themes, where those who feel like things are immediately out of their control will tend to start having more psychological problems, while those who have more higher functioning, they tend to be able to understand that, okay, the pandemic has been with us for 6 months now, that it's not going to go away anytime soon.
that we may actually need to continue to do social distancing and so on for the next year, maybe even longer. I think those who understand that the stress is going to be for a long period of time tend to do better. I think this interplay, this balance between the two is very important. And so far, I think like a good way to look at the amount of research that has come. So this current pandemic is quite new. There is a lot of research that is already coming, but I think the best way to understand it would be to focus, to look back in history, and that can help us understand how we dealt with situations like this before. So we have not had a global worldwide pandemic like this for many, many years. But in 2002, there was the SARS pandemic, which began in China, and it spread to 32 countries. It was a little lesser than this, but at that time, what happened was that it was more, it was not as infective as the current coronavirus pandemic, but it was more, the mortality rates were higher. So more people who got the infection actually succumbed to the infection. And at that time, there's a lot of research that was done to see what the psychological impacts were at that time. And they realized that there was an increase in what we call post-traumatic stress disorder, acute stress disorders, also increases in depression. And overall, in the general public, especially in countries like China and Canada, which were most affected, there was in general a lot of negative mental health outcomes. There was a lot of what we call health-seeking behaviors, meaning calling your doctor multiple times, little things like that, there was a lot of increase in that. The good thing that we learned also from the previous pandemic, was that very soon, within 6 months to a year after the pandemic actually finishing, many people actually got better. Not everybody who started experiencing symptoms were the ones who needed long-term psychiatric treatment and so on. So that was actually one good thing that we did learn from it. और आइए अब बढ़ते हैं गणेश उत्सव की श्रृंखला की तरफ। कोविड-19 के प्रभाव से पूरे उल्लास के साथ में सब लोग मिलजुल कर तो इस उत्सव को नहीं मना सके, फिर भी एकादशी के दिन वत्तल धाम में बड़ी धूमधाम से इस उत्सव को मनाया गया। पारंपरिक उत्साह और भक्ति का स्वरूप जिस तरह से वत्तल धाम में देखा गया, वहीं नौका की झांकी भी गणेश भगवान की इस अवसर पर भक्तों को उनका दर्शन करने को मिला। तो आइए इस उत्साह को बढ़ाने वाले उत्सव की तरफ वत्तल धाम न्यू जर्सी चलें। આજે વડતાલધામ સ્વામિનારાયણ મંદિર સમરસેટને આંગણે જલઝીણી એકાદશીનો ઉત્સવ હતો। જલઝીણી એકાદશીમાં ભગવાન પોતે જળવિહાર કરવા માટે જતા હોય છે। પોતાના ભક્તો સાથે, સખાઓ સાથે, પૂર્વે ગોવાળો અને ગોપીઓ સાથે ભગવાને જમુનાજીમાં જળવિહાર કર્યો, ત્યારથી આ જલઝીણી ઉત્સવ ઉજવાય છે। સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાન જળઝીણીના ઉત્સવ કરાવતા, અને અત્યારે પણ સંપ્રદાયમાં વડતાલ, ગરડા વગેરે તીર્થોમાં ભગવાનને નાવમાં બેસાડીને જળવિહાર કરવામાં આવે છે। અને નદી હોય કે સરોવર હોય, 5 વખત ભગવાન ફરીને આવે, 5 આરતીઓ થાય, અને મંદિરથી જે નદી હોય, તીર્થ હોય ત્યાં સુધી જળયાત્રા નીકળતી હોય છે। અને સાથે સાથે ગણપતિજીનો પણ ઉત્સવ હોય છે। ગણેશ ચોથથી લઈને આજ દિવસ સુધી રોજ ગણપતિજીનું પૂજન થાય। એ પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાને પંચાયતન દેવને પૂજ્ય માન્ય કર્યા છે, એટલે દરેક મંદિરોમાં પૂજનીય ગણેશ સ્વરૂપ હોય છે। પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુનામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી ચરણ સરોજ તમારા શ્યામ શરીર મારે સુંદર શ્યામ શરીર
श्यामा पधार्या घन श्यामा पधार्या दिलवा जमुना निर्मारे भुवन सहित तरसे आया अवसर करुणा निधि करुणा बहु कीधी वाल करुणा बहु कीधी मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी दीदी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सजानंद स्वामी महाराज मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी दीदी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सजानंद स्वामी महाराज जय પુનરાગમનાય સ હે પ્રભુ તમે પોતાના સ્થાનમાં બિરાજમાન થજો અને જ્યારે જ્યારે અમે પૂજાનો સંકલ્પ કરીએ ત્યારે પાછા પધારજો એમ પ્રાર્થના કરી અને ગણપતિજીને જળમાં વિસર્જિત કરીએ છીએ. બોલો વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય. ગણપતિ બાપા મોર્યા ગણપતિ બાપા મોર્યા ગણપતિ બાપા મોર્યા ગણપતિ બાપા બાપા મોર્યા રે બાપા મોર્યા રે પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી કુંજ વિકરવ કમલીના કરતાય વિનાશી પ્રભુ કરતાય વિનાશી ચોથથી લઈને એકાદશી સુધી વિશેષ એમની પૂજા થાય છે. અહીંયા મંદિરમાં રોજ વડતાલધામ ન્યૂજર્સી મંદિરમાં પણ રોજ સાંજે ગણપતિજીનું પૂજન થતું હતું. આજે ગણપતિજીનું એ જે જળનો બહાર સ્વિમિંગ પુલ બનાવેલો હતો એમાં ભગવાને જળમાં વિહાર કર્યું અને પછી ગણપતિજીનું એમાં વિસર્જન થયું છે. આ એક આપણી સનાતન સંસ્કૃતિનો આ તહેવાર છે. જલઝીણી મહોત્સવ ધામધૂમીથી બધાય સનાતન મંદિરોમાં ઉજવાતો હોય છે અને સાથે સાથે ગણપતિજીનો સાર્વજનિક ઉત્સવ છે. ગણપતિજીને પણ જ્યાં જ્યાં ભારતીય લોકો વસે છે દેશ દુનિયામાં બધે ત્યાં ગણપતિજીનું વિશેષ પૂજન કરતા હોય છે. ગણપતિજી વિઘ્ન વિનાયક દેવ છે, સર્વના જીવનના વિઘ્ન દૂર કરે છે. તો આજે ગણપતિ વિસર્જનના દિવસે આપણે ગણપતિજીને પણ પ્રાર્થના કરીએ કે સર્વના જીવનમાં આવતા વિઘ્નોને દૂર કરજો અને સર્વનું રક્ષણ કરજો, સર્વને જીવનમાં સફળતા અપાવજો. અને આ જે એકાદશી છે એને પરિવર્તિની એકાદશી ચાતુર્માસમાં ગણાવાય છે અને પદ્મ એકાદશી પણ કહેવાય છે. આ દિવસે માંધાતાએ વ્રત કરીને પોતાના રાજ્યમાં આવેલું દુષ્કાળનું નિવારણ કરાવ્યું છે. તો આ આપણે જે આ વિશ્વમાં મહામારી રૂપ જે મહાકાળ આવી ગયો છે, જે કઠિન કાળ, એમાંથી ભગવાન સર્વનું રક્ષણ કરે એટલા માટે આ એકાદશીનું જે ફળ છે બધા ભક્તો ભગવાનને અર્પણ કરીને એવી પ્રાર્થના કરી છે. અહીંયા પણ એવી પ્રાર્થના કરી છે અને બધા એવી જ રીતે ભગવાનને આ એકાદશીના દિવસે પ્રાર્થના કરજો. સર્વ વિશ્વનું મંગળ કરે, સર્વનું રક્ષણ કરે, સર્વને આ મહાકાળમાંથી ભગવાન શ્રી હરિ સ્વામિનારાયણ ભગવાન તેમજ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ એવો વિઘ્ન વિનાયક દેવ સર્વનું રક્ષણ કરે એવી ભગવાનના શરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અસ્તુ. जय स्वामीनारायण. आप देख रहे हैं विजनो विषय वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम. इस कार्यक्रम को लेकर हम सोम, मंगल, बुध और गुरुवार की शाम 8 बजे
आपके पास पहुंचते हैं और रविवार को एक साप्ताहिक अंक भोजनोपदेशिया का आपकी सेवा में पेश किया जाता है। आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह और हौसला दोनों बढ़ते हैं। उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए निवेदन, बने रहें हमारे साथ। होते हैं हाजिर इस छोटे से ब्रेक के बाद। गणेश उत्सव पर 9 दिन तक एक विशेष उत्सवमय पावन कार्यक्रम साई मंदिर हिक्सविल में भी मनाया गया। इस अवसर पूजन अर्चन के साथ साथ हवन का आयोजन भी नित्य किया गया। प्रस्तुत है 9वें दिन के इस उत्सव की कुछ झलकियां, जिसका आयोजन संचालन किया जा रहा था संस्कृत ब्रदर्स महादेव शर्मा और श्रीनाथ शर्मा जी द्वारा। कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् किञ्चनात्रिमार्जनं चिरन्तनोक्ति भाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं पुरारिगर्भचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं कजयपुराणवारणम् कान्तकान्तिमन्दकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्दहीनमन्तरायकुन्दनम् वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। श्री गणेशाय नमः। अत्यंत भक्ति पुरस्सर से साई मंदिर में डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय जी यहाँ आयोजन किया है। 9 डेज हवन किया है। अग्निमुखा वै देवाः ऐसा वाक्य कहते हैं। अग्नि आराधन बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन काल से अग्नि का आराधन करते हैं। The past 9 days, every day we've been performing pujas for Ganesh Ji and then performing the havan outside to basically ask for blessings and purify the environment and atmosphere around us. Overall, it's been a great experience. The first time I've got to do all 9 days. So it's been a lot of fun and I hope to be able to do it again. गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। ओम हेरंगाय नमः। ओम लंबचक्राय नमः। ओम ह्रस्वग्रीवाय नमः। ओम महोदराय नमः। ओम मनोत्कटाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम मंत्रिणे नमः। ओम मंगलस्वराय नमः। ओम हमारा रक्षा करो, ऐसा भगवान का प्रार्थना करते। हमारा प्रार्थना सब सुने हैं। ये कोविड-19 का हटा के आपका अनुग्रह से धरती पे सभी विश्व कल्याण के लिए यूनिवर्सल पीस, सभी अशांति में हैं। We did the Havana outside and I really liked doing them and I thought it was really fun and it was like good for us too. So हम ऐसा आपको प्रार्थना करते हैं, सभी का रक्षा करिए। बहुत लोग बीमारी में हों, सो आपका अनुग्रह से आप ये धरती का कल्याणकार हो, मंगलकार हो, सद्बुद्धि शक्ति अच्छा दे के हमारा रक्षा करिए भगवान। ओम श्री गणेशाय नमः। बहुत दिन से हवन करने का बहुत इच्छा था, बहुत बार कोशिश किया, हर बार ही कुछ न कुछ हुआ, कुछ वजह से नहीं हुआ। इस बार सब कुछ अपने आप हो गया। हम बता नहीं सकते वर्ड से कितना आनंद है, सब कुछ है, एनर्जी इतना डिफरेंट है। हमने जो हवन किया सब कुछ का आज बहुत उसका फल भी मिल रहा है। हाँ, सबका दुख हरण करने के लिए जो हम प्रार्थना कर रहे थे उसका पर प्रथम का उसका
परिणाम भी दिख रहा है, सब कुछ है। शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। जय बोलो गणेश महाराज की जय। I feel peaceful to come here all the time, and the priest said they were remembering me, and accidentally I came last week and I came to know about Havan. I enjoyed, and it was blissful and peaceful to sit there and watch everything. We are now in Hicksville, New York, in this World Country Road. From 9 days from Ganesh Chaturthi onwards, today is the 9th day, performing special Ganesh Havan. Means this Havan, this smoke, everything is purifies all the displaced and the... These 9 days have been saturated with a lot of divine shabda, vibrations that were created by these two Brahmin priests who have very great knowledge of the Vedas and the Shastras. And even Dr. Nori commends them, and he says that their pronunciation is like that of a PhD. So by their invoking Ganesh, they have been blessing not only us, but the whole earth, the whole of humanity, by the vibrations they've created here. 9th डे है आज, बहुत अच्छा से हवन हुआ है। और जब सदगुरु साईं बाबा की वजह से सब कुछ हो रहा है, बाबा का ब्लेसिंग हम सब पे है, हम ऐसे ही रहे, सबको अच्छे भाव से सब देके और सबका वही बता सकते हैं। और जय गणेश। आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम। इसीलिए भगवान का हम प्रार्थना करते हैं, क्षमा करिए मुझे हमने क्या क्या गलत किया है, वो सभी पापों का नाश करके हम उद्धारण करिए, भगवान ऐसा प्रार्थना करते हैं। जय बोलो गजानन महाराज की जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि अवश्य बने फ्रेंड ITV गोल्ड के फेसबुक पेज पर और सब्सक्राइब करें ITV गोल्ड का यूट्यूब चैनल। अपने ख़तों के साथ अपनी प्रतिक्रिया और इवेंट्स के बारे में हमें लिखें events@itvgold.com पर। साथ देने के लिए आपका आभार। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, प्रसन्न रहें। फिर एक बार साथ देने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए अशोक व्यास को दें अनुमति। नमस्कार।